Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade pre-9. Welcome to your chemistry class, and today's topic is related to your chemical species, which is part 2. And in this part of lesson, we are going to discuss molecular ion and free radicals as the chemical species. These topics are mentioned on pages 15 and 16. Now in the first, I am going to define the molecular ions. So first heading will be definition. When a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है, तो ये एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. Basically, what is a molecule? Molecule is actually the combination of different atoms. That is, more than one atoms form a molecule. A molecular ion is a chemical species that contains positive or negative charges. So we can say that it is not only a molecule which is the combination of different atoms, but also it is an ion. And what are ions? Ions are those chemical species which contain charges on them, and these charges on them are developed due to the loss or gain of electron. Next heading is types of molecular ions. Like ions, molecular ions also consisting of, or they are also of two types. Number 1, cationic molecular ion, cationic molecular ions, and number 2, anionic molecular ions, anionic molecular ions. So first case of molecular ion is called the cationic molecular ions. Now what are cationic molecular ions? Basically, the cationic molecular ions are present in large amount in nature as compared to anionic molecular ions. Molecular ions की जो टाइप इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा और वाफर पाई जाती है वो cationic molecular ions हैं. Some of the examples of cationic molecular ion will be provided to you after the main heading definition. So again, a simple definition of molecular ion is how you will define the cationic molecular ion. So cationic molecular ions are those molecular ions which carry the positive charge on them. What does this indicate? That we know that these are cations, and cations are those which contains positive charge on them due to losing their electrons, due to or by losing their electrons. Cationic molecular ions को हम ये नाम क्यों देते हैं? क्योंकि according to cation condition, cations जो हैं वो दोज ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स का वो ग्रुप होता है जो कि अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, जिनकी वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ cationic molecular ions आर CH4 having positive charge, helium. CH4 is basically called methane. In the similar manner, helium is also a cationic molecular ion, and N2 having positive charge on it are some of the examples of cationic molecular ions. Another type of molecular ions are called anionic molecular ions. जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एनाइंस हैं. एनाइंस क्या होते हैं? एनाइंस वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं जिनको हम नेगेटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं. इन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है?
ये क्यों नेगेटिव चार्ज हासिल करते हैं? क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं यानी गेन करते हैं. So according to the definition of an ionic molecular ion, it is too much or exactly resemblance with the anions. So when a molecular ion gains electron, then it acquires a negative charge on it. So we can say that both definitions are similar to each other, except this, that anions are atoms or group of atoms, while molecular ions, which are basically anionic molecular ions, are not only the group of atom, but actually these are the combination of different atoms which are merged together to form a molecule. And after getting or after receiving or donating electrons, they acquire some charges on them, and in the case of anionic molecular ion, the charge is the negative because they gain electron. Some of the examples which you are going to write and not mention in your book, so note it down from here. Examples. What are the common examples of this species? Starting from very simple one, bromide. Bromide ion. Bromide is a molecular ion, Br negative. You can also add some other examples like chloride, Cl negative. Then we have oxygen oxide, O2 negative. And the fourth example which you can write here is sulfide, represented as S2 negative. So these are some of the examples of anionic molecular ions. Next heading is formation of molecular ion. Molecular ions are formed in a special instrument which is made up of glass, and it is called discharge tube. So this whole oval shaped structure in front of you is called a discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? ये एक ग्लास ट्यूब होती है, यानी शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसके दो एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं. क्या लगाए जाते हैं? इलेक्ट्रोड्स. एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है, और दूसरी तरफ का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं. What is the basic difference between both these plates? ये मेटालिक प्लेट्स होती हैं, जिनमें से एक प्लेट को यानी एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है. So this is a battery. And on the other side एक और आपको वायर कनेक्शन नज़र आ रहा है जो कि इस प्लेट तक जा रहा है. And this connection or this plate of electrode is called cathode, and it is connected to the negative टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यानी ये नेगेटिव सिरा है बैटरी का और ये पॉजिटिव पॉइंट है. सो पॉजिटिव सिरा जो है वो एनोड से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव सिरा यानी नेगेटिव एंड जो है वो कैथोड से कनेक्टेड होता है. सो आफ्टर दिस यहाँ पर एक ट्यूब आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ नॉर्मली रिलेटेड टू द वैक्यूम. सिर्फ आप ये लिख सकते हैं टू वैक्यूम पम्प. इसका मकसद ये होता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी एयर है उसको रिलीज़ करवा दिया जाए, यानी डिस्चार्ज कर दिया जाए, और इसमें प्रेशर के तहत क्या चीज़ भर दी जाती है? डिफरेंट गैसेस जो हैं वो भर दी जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वक्त कहूँ कि मैंने इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भर दी है. विच गैस इज़ प्रेजेंट इनसाइड? नाइट्रोजन गैस. जब बैटरी को ऑन किया जाता है तो बैटरी से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलना शुरू होते हैं, और बाकायदा तौर पे वो कैथोड प्लेट से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बैटरी से हमने क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस. कौन से चार्जेस होते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड और इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे ही बैटरी ऑन होती है, वायर के ज़रिए बाकायदा तौर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं?
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं. So these are now many electrons or high energy electrons which are present inside the discharge tube, and these are finally bombarded on the gases. So you can also say gases are bombarded with these electrons inside the discharge tube. Now what happens after this bombardment? यानी यूँ समझ लें कि जिस तरह से बॉम्ब खुदा ना खास्ता कहीं पर फेंके जा रहे होते हैं या गिराए जा रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बम्बार्डमेंट. तो व्हाट इज़ बम्बार्डमेंट? कि बम्बार्डमेंट क्या चीज़ है कि बाकायदा तौर पे गैसेस और इलेक्ट्रॉन्स का टकराव, कोलिजन. इसके नतीजे में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल N2 क्या हो जाएगी? N2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर बनाएगी N2 नेगेटिव चार्ज ऑन इट. तो यहाँ पर ये इसका क्या मतलब है कि N2 क्या हो गई? N2 was gas, now it becomes ionized, and after ionizing with electrons it is now called molecular ion. And what type of molecular ion N2 negative is? It is basically called anionic molecular ion. So every molecular ions are formed in this way. Now the next question is related to the differences between molecule and molecular ions. So in this column we are going to define and describe the molecule, while on the other side the molecular ion description is given. So first point of difference will be definition. What is a molecule? It is the smallest particle of a compound and can exist independently. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो आज़ाद हालत में रह सकता है, और ये कंपोनेंट या जो भी पार्टिकल है वो कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो कर सकता है. इसमें अपने कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं. ऑन द अदर साइड मॉलिक्यूलर आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. जबकि मॉलिक्यूलर आयन आयनिक कंपाउंड का जो है वो एक छोटा हिस्सा या इकाई होती है जो कि आयनिक कंपाउंड के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. द सेकेंड डिफरेंस इज़ रिलेटेड टू चार्जेस, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो बेसिकली molecules have no charges on them, so they are neutral. Neutral means they do not contain charges on them, while on the other hand molecular ions contain the negative charge as well as the positive charge, and you have seen this in the form or types of molecular ion like cationic and anionic molecular ions. Third difference is formation. ये कैसे बनते हैं? Molecule is formed by the combination of different atoms together. Like if I'll write here oxygen plus oxygen, so it forms O2. So what is this formation about? It is the formation or combination of two atoms of oxygen to combine oxygen gas, which is a molecule. While in case of molecular ion, they are formed by the ionization of a molecule, as I mentioned in the case of discharge tube. Number 4, stability. How much they are strong. Stability mean कि ये कितने strong हैं, इनमें मुस्तहकम रहने की या मजबूत रहने की कितनी सलाहियत है. So molecule is a stable unit while the molecular ions are not stable, so they are reactive species. So we can differentiate both species in this way, that what is the meaning of stability कि कितने मजबूत हैं. तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये आराम से बहुत जल्दी क्विकली नहीं टूटते, जबकि मॉलिक्यूलर आयन बहुत आसानी से टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये एक रिएक्टिव स्पीशीज़ के तौर पे एक्ट करते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. And afterwards you have to give the fifth point related to it, which is very easy for you, and it is examples of both molecule and molecular ion. So you can add the fifth point as examples. So you can give 2 examples of each. Third type of chemical species are called free radicals.
As we know that radicals are atoms or group of atoms which contain some charges, either positive or negative. But in case of free radicals, they are free of charges. They do not have any charges, positive or negative, on them. So we can define the free radicals in this way, that atoms or group of atoms having an odd, that is unpaired electron in their atoms or group of atoms is called free radical. एटम या एटम के ग्रुप का ऐसी केमिकल स्पीशीज़ या एटम के ग्रुप पर मुश्तमिल ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जो कि ऑड नंबर, ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर से मुराद ये होता है कि 1, 3, 5, यानी ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम में हों तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तस्वर करते हुए हम फ्री रेडिकल्स का नाम देंगे, यानी वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स. नाउ रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्री रेडिकल. Free radical is represented by putting a dot, that is this dot, over a symbol. Now there are some symbols of free radicals like hydrogen having one dot over it, जो कि represent कर रहा है कि ये free radical है. Chlorine, chloride having dot over it, again a free radical chloride. H3C, which is a methyl having a free radical in the form of dot. तो ये तमाम आपकी examples हैं which are representing the free radicals. Now they are talking about the odd or unpaired electron. What does this mean? For example, take the example of hydrogen. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और इसके एक ही शेल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द वैलेंस शेल, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. तो इसके आउटर मोस्ट अराउंड द न्यूक्लियस जो शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अब आप देख रहे हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड 1 इज़ इंडिकेटिंग एन ऑड नंबर. तो ये एक ऑड नंबर है जिसका कोई पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है. अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है. लिहाजा इस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अब हमने हाइड्रोजन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिस्ट में शामिल कर दिया और ये अब क्या बन गया है, ये हमारे लिए एक फ्री रेडिकल बन गया. एंड सेम इज़ द केस विद द क्लोरीन. अगर आप क्लोरीन को लें तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज़ बेसिकली अगेन containing 17 proton, 18 neutron, but we are not concerned with these. We are actually concerned with the number of protons which are present in different shells. So the first shell contains 2. Now this first shell contains 2 electrons. Now this is in the form of a pair. Again the second shell contains 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. Now I have already made it in the form of pair. You can observe it. मैं इसको किस शक्ल में बना रही हूँ, एक जोड़े की शक्ल में बना रही हूँ, which is actually in the form of pair. And till this stage, यहाँ पर इस स्टेज तक पहुँचने के बाद हम कह सकते हैं कि क्लोरीन अभी भी फ्री रेडिकल की लिस्ट में शामिल नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करते हैं हमें पता चलता है कि क्लोरीन के जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट हेयर 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल एंड द 7 number of electrons in the last shell represent that every electron is pairing with the other. अगर गौर से देखें तो 7 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका कोई पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी वजह से और ऑब्वियसली 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक फ्री रेडिकल है. सेम इज़ द केस विद द मिथाइल, दैट इज़ H3C. Next heading is formation of free radicals. Free radicals are formed by the breakage or homolytic or equal breakage of the bond which is present between 2 atoms when they absorb heat or light energy. So we can write some of the examples of formation of free radicals. So the first formation is with the homolytic breakage of a molecule which is hydrogen gas or hydrogen molecule.
Actually, the hydrogen gas is the combination of two atoms. So this molecule is the combination of two atoms in this way. If I'll split the hydrogen gas into two atoms, then these two hydrogen atoms are combined with a kind of a bond. And what is this single line representing here? It is a bond. Bond is that force that actually joins two atoms together. So in this formation of free radical, we can observe that if we will provide heat energy or light energy to them, then this heat or light energy gets absorbed in the hydrogen molecule and break this bond which is present between these two hydrogen atoms. And after their breaking or homolytic cleavage, homolytic means a equal breakdown, बिल्कुल आधा आधा हो जाना. So this homolytic cleavage or breakdown can produce your free radicals in this way. So how many free radicals are produced? One hydrogen with the formation of free radical, and this one is another free radical. So finally we can also write is in the form of two hydrogen which are the free radicals. Next example is related with, I think you are familiar with three examples, so I am taking one of them. Once again, CH4. Now what is the combination of this molecule? Actually, this molecule is formed by the combination of one carbon atom along with the four hydrogen atoms. So these are four hydrogen atoms. And if the same heat or light energy will be applied, what happens to this molecule of methane? What is this molecule called? Methane molecule, natural gas which is also called. So this molecule is equally broken down by the homolytic cleavage, यानी इसकी ये homolytic cleavage हो जाएगी. होमोलिटिक क्लेवेज कैसे होगी? अब कार्बन तो नहीं टूट सकता, तो इस होमोलिटिक क्लेवेज के नतीजे में दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे. कैसे? कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद ये हिस्सा अलग, और यहाँ से आपका ये पार्ट मीथेन का अलग हो जाएगा. एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी, क्या होंगे रिजल्टिंग प्रोडक्ट? सो H, इस हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें कितनी हाइड्रोजन, 1 2 3, तो ये आपके बन गए 3 हाइड्रोजन H3 along with one carbon atom. So this is an example of free radical here, and along with it there is one more hydrogen left over here. So hydrogen again becomes a free radical. So these are two examples of the formation of the free radicals in which you can observe that homolytic breakage occurs between the bond, or you can say between two atoms, to break the bond in the presence of heat or light energy. The next topic is differences between ions and free radical. Dear students, आपने इसमें ये करना है कि ions और free radicals के दरमियान differences को इन पॉइंट्स के तहत, यानी इन हेडिंग्स के तहत दिखना है, जिसमें आप एग्जाम्पल्स को भी शामिल करेंगे. इस तरह से ये 4 पॉइंट्स होंगे जिनको आपने यहाँ पर लिखना होगा. तो पहली हेडिंग आपके पास होगी चार्जेस की, जिसमें आपने आयंस के बारे में क्या लिखना है कि ऑब्वियसली दीज आर द एटम्स विच हैव सम चार्जेस ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वाइल फ्री रेडिकल्स क्या हैं, इन पे चार्जेस नहीं होते. दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जिस्टेंस में आपने ये बताना होगा कि आयंस जो है होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस, यानी आयंस जो है वो बाकायदा तौर पे आपके लिक्विड हालत में भी और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स आपके सॉल्यूशन के ख़ास तौर पे हालत में, और इसके अलावा आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एयर की में भी इनकी एग्जिस्टेंस होती है. एयर में मतलब कि ये गैशियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, यानी लाइट का इन पर क्या असर होता है. अगर लाइट मौजूद हो तो आयंस की फॉर्मेशन मुतासिर नहीं होती, लेकिन अगर लाइट मौजूद हो तो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसा कि हमने अभी आपको पिछले पॉइंट में समझाया था.
आफ्टरवर्ड्स यू विल राइट डाउन द एग्जाम्पल, सो दैट विल बी द फोर्थ पॉइंट. आइंस के लिए आप वही एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं जैसे सोडियम आइन, क्लोराइड आइन, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. और फ्री रेडिकल्स के लिए आप कोई भी दो एग्जाम्पल्स लाइक H डॉट Cl डॉट लिख के ये अपना क्वेश्चन इन 3 और 4 हेडिंग के साथ कंप्लीट करेंगे. लास्ट शॉर्ट टॉपिक इन द एंड इज़ प्लाज्मा. प्लाज्मा की टर्म बेसिकली आपकी फ़िज़िक्स में यूटिलाइज होती है प्लाज्मा फ़िज़िक्स के नाम से. एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. ये क्या है? ये मैटर की चौथी हालत है. जिस तरह से मैटर की कितनी हालतें होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी तरह से मैटर की चौथी हालत जो इस वक्त हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, हमारी अर्थ में मौजूद है, वो आपकी प्लाज्मा कहलाती है. एंड इट इज़ द फोर्थ स्टेट. एंड इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल. फ्री चार्ज पार्टिकल्स से मुराद यही है कि इन पे जो चार्ज पार्टिकल्स ये मौजूद तो होते हैं लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं. गैशियस मिक्सचर्स की शक्ल में ये मौजूद होता है. और गैशियस मिक्सचर ये किस चीज़ का होता है? आयंस और न्यूट्रल एटम्स, यानी इसमें आयंस, न्यूट्रल एटम्स, मॉलिक्यूलर आयन सब कुछ शामिल होता है. यानी एक तरीके से ये मिक्सचर है जो कि आपकी जो आपकी यूनिवर्स है या आपकी जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं उनसे थोड़ा सा अलग या डिफ्रेंशिएटेड है. नेक्स्ट, यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा. आपकी पूरी कायनात जो है वो प्लाज्मा की शक्ल में इस वक्त दुनिया में या पूरी कायनात आपकी मौजूद है. और आपकी कैटाइनिक एंड एनाइनिक जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो भी आपके प्लाज्मा में मौजूद हैं. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है दैट आर रिलेटेड टू द प्लाज्मा. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा. इनमें एक दो एग्जांपल्स आपकी ऐसी हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ सोलर विंड. पहली एग्जांपल आपके पास आ रही है सोलर विंड. सोलर विंड बेटा क्या है? अगर आप सोलर से वर्ड लें तो सोलर मीन्स सन. यहाँ पर यूँ समझ लें कि शमसी हवाएं, या हम आपको सोलर विंड की शक्ल में बता रहे हैं जो हमारी अर्थ तक पहुँच रही है, ज़मीन तक सूरज से निकलने वाली सोलर विंड. यानी एक तरीके से इनको आप गर्म हवा भी कह सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ लाइटनिंग. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ लाइटनिंग. व्हाट इज़ लाइटनिंग? लाइटनिंग को इस तरह से समझ लें कि मैं यहाँ क्लाउड्स बना देती हूँ. और क्लाउड्स क्या हैं? ये ब्लैक क्लाउड्स हैं जिनमें से बहुत ही तेज़ जो है वो बारिश हो रही है. और बारिश के साथ साथ इसमें बादलों की जो कड़क है और बिजली की जो चमक है वो भी नज़र आ रही है. और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पे इस तरह स्पार्क्स हो रहे हैं. और दिस स्पार्क इज़ कॉल्ड लाइटनिंग. यानी बाकायदा तौर पे बादल के कड़कने और बिजली के चमकने वाली जो है वो सिचुएशन है. इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल आप देना चाह रहे हैं वो न्यूक्लियर जो है वो फायर बॉल की हो सकती है. थर्ड एग्जांपल के लिए अगर आप मिलेंगे तो आप लिख लीजिए न्यूक्लियर फायर बॉल. क्या होता है न्यूक्लियर फायर बॉल? आपने देखा होगा कि अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, न्यूक्लियर जो धमाके किए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर न्यूक्लियस का एक तरीके से ब्रेक डाउन हुआ है या न्यूक्लियस में से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो निकल रहे हैं. और निकलने के बाद उन्होंने जो है वो एक एक्सप्लोजन किया है. एक्सप्लोजन मीन धमाका हो रहा है. तो वो जो धमाका है जैसे एटम बॉम्ब्स वगैरह का जो एक्सप्लोजन होता है, तो वो एक्सप्लोजन क्या है? वो आपका न्यूक्लियर फायर बॉल है जो कि प्लाज्मा की एग्जांपल है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेसन अबाउट केमिकल स्पीशीज़ एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द प्लाज्मा एज वेल. थैंक यू क्लास.